So we have to be discussed validation and verification. So whenever we talk about the validation, validation का बेटा मतलब ये होता है ऑटोमेटेड चेक. ऑटोमेटेड चेक कौन करता है? बाय द कंप्यूटर. कंप्यूटर क्या चेक करता है कि जो डाटा इंटर हो रहा है वो रीजनेबल है या नहीं, वो रीजनेबल है या नहीं. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलिडेशन. सो व्हाट इज वैलिडेशन? बेसिकली इज ऑटोमेटेड चेक इज checking by a computer that data is reasonable. ठीक है, before it is accepted into a computer. Into a computer. ठीक है. So when the data is validated by a computer system, if the data is rejected, a message should be output explaining why the data is rejected. Okay, so there are some different examples of the validation. First of all, the first one example is range check. What is this? Range check. In a range check, basically this is used by the value of a number is between upper and lower value. What the value of a number is? Number is between upper and lower limit. Means your data between 0 to 100. Means, yes, like in automated, not automated system, automated check by the computer that you are entering the data. This is correct or not? This is reasonable or not? What type of reasonable is that? First of all, range check. Range check means that you are entering the data 0 till 100. If it is between 0 till 100, it will tell you that data is between range. Otherwise, it out of the range. Okay. So next one type of the validation is, this is a length check. This is a length check. Length check means that you are using automatically on the passwords. Let's suppose you just enter the exact number of character. If your password is, the length is 8, it will tell you. Let's suppose if you are taking a pseudocode in which you are saying that if the length of the password not equal to 8, then output that your password is incorrect, or your password is weak. Okay, so that is used for checks digits, either it's between the total length or not. Okay, so okay, so length check means it will check the total length of the character. It check length of the character, or you can say that exact length of characters. Okay, length check mean you are taking the passwords. I also gave you the example as well. Okay, so the next one thing is type check. Next one thing is type check. Type check mean, let's suppose you are entering the data of the given data, for example, that the number of brother or a sister would be an integer or a whole number. It will check the data is whole number or not. So it will be a type check. The next one thing is a presence check. What? This is presence check. Presence check mean, let's suppose, for example, that you are going to be entering. You are just
fulfilling an online, let's suppose, form. So let's suppose you are going to the forget one of your password or your email. It will not submit your form. It will just told you, ये आपको बता देगा कि भाई आपने इसको इंटर नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे डाटा इंटर नहीं किया, वहां पे प्रेजेंस चेक लगा हुआ था, इसीलिए उसने आपको बता दिया कि भाई यहाँ पर ईमेल अपना लेट्स सपोज या पासवर्ड इंटर करो, ठीक है, तो वो आपकी मजबूरी बन जाएगी, ठीक है, उसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि उस जगह पर प्रेजेंस चेक लगा हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं, इस चेक को हम कह सकते हैं चेक्स दैट टू इंश्योर दैट some data has been entered and the value has not been left blank. Okay, for example, an email address, online transactions must be completed. Otherwise, if you don't complete, it will not submit your whatever. Next one is the format check. Next one is format check. Format check means it will check. Let's suppose you are entering the email. If you are entering the email, it will check that the characters entered confirm to predefined pattern or not. Predefined pattern or not. Let's suppose that you are entering email address mali123.com. It will accept or not? Tell me in chat box. Which one will be accept? It will check. This is not a format of Gmail or email. So it is a format. So it will check that this is a format check. It will check incorrect digit. Let's suppose you entered. It will not accept. It will not accept like your Gmail or email and all that. Okay. So the next one is the verification check. So verification check not done by the automatically by the computer. Okay. So this thing is verification. This is verification. In verification, basically, we are checking that the data has been accurately copied from one source to another. Okay. So for instance, input to a computer or a transfer from one part of the computer system to the another. So it will check that this is correctly we are entering the data or not. For example, the verification or should be complete like that. So for instance, input into a computer or transferred from one part of a computer to another.
to another. Okay, so verification method must be done by two input data type. First of them is double entry. First of them is double entry. Double entry means you will check that data is entered twice. Data is entered twice. डेटा दो दफा इंटर होगा बेटा, ठीक है. समटाइम्स बाय डिफरेंट ऑपरेटर्स, ठीक है. कंप्यूटर सिस्टम बोथ इंटर कर रहे होते हैं और चेक कर रहे होते हैं डेटा ठीक है या नहीं है. लेट्स सपोज उसकी एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं. वेरीफाई कैसे करते हैं, हमने कहा जी डबल एंट्री के थ्रू. लेट्स सपोज हमने कहा कि आपके पास ईमेल, पहले आप लोग क्या लिखिए ईमेल, उसके बाद वो क्या कहता है हमसे कंफर्म योर ईमेल. तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटे डबल एंट्री, ठीक है. बाय द डिफरेंट ऑपरेटर्स, कंप्यूटर सिस्टम बोथ जो है वो कैरी कर रहे होते हैं डिफरेंट आउटपुट्स और एरर मैसेज जो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं कि लेट्स सपोज डाटा को एंटर कर दीजिए अगेन, ठीक है. अच्छा, द नेक्स्ट वन इज एस, जो नेक्स्ट वन आपके पास एग्जांपल है बेटे, उसको हम लोग बोलते हैं विजुअल चेक. क्या बोलते हैं? विजुअल चेक. विजुअल चेक भी बोलता है कोई, कोई इसको स्क्रीन चेक भी बोलता है. लेट्स सपोज विजुअल चेक, ठीक है जी. ये विजुअल चेक या स्क्रीन चेक क्या है बेटे? बेसिकली दिस इज अ मैनुअल चेक. क्या बेटे? दिस इज अ मैनुअल चेक. क्या है बेटे? मैनुअल चेक है, जिसके अंदर क्या चेक किया जाता है? इज अ मैनुअल चेक कंप्लीटेड बाय द यूजर. कौन यूज करता है इसको कंप्लीट? कंप्लीटेड बाय द यूजर who is entering the data. Who is entering the data, ठीक है. Data is displays on screen, ठीक है जी. लेट्स सपोज मैंने आपको भी डाटा दिया और मैंने कहा कि इसको भी कंफर्म कर दो. इसको बल्कि थोड़ा सा और कंप्लीट लिख दे, स्क्रीन एंड फिर इसको क्या करना है? यूजर इज आस्क्ड टू कंफर्म that it is correct. It is correct before counting. लेट्स सपोज मैंने आपको डाटा दिया और मैंने क्या कहा कि लेट्स सपोज इसको टाइप करो. आप लेट्स सपोज उसको टाइप करते हो, चेक करते हो, और टाइप करके टाइप कर लिया और फिर उसके बाद उसको विजुअल चेक करते हो कि भाई जो डाटा लेट्स सपोज मैं एंटर करने जा रहा था क्या ये वही है या कोई और तो नहीं है. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटे? विजुअल चेक. Don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon to stay updated.